Hello everyone, welcome to another new video. Right now we are below the Chanshal Pass and this place is called Chanshal Heights and the contact number are also given over here. Please contact them. I will also go and talk with the owner, so please continue watching the video. And here there is a good parking space. The road condition was not good. Yesterday night it was raining heavily. That's why we reached here by night, and so we stopped over here. We thought of doing camping, but instead of doing camping we stay inside the tent, which I will show you in the video also. So now let's go inside. Let's look at the design of this chair. It's good, yeah. It's an apple tree. Okay. This is the restaurant, kitchen and all. I love Chanshal. At least I can pronounce this Hindi. There is also a sitting area. Okay. Let's go inside the kitchen also. तो भैया आके आपका वीडियो बनाऊंगा. तो भैया जी अभी खाना निकल रहा है गेस्ट के लिए. क्या बनाया हुआ है आज कढ़ी है, राजमा है. अच्छा, ये कढ़ी है ना? हाँ जी. कढ़ी इज वेरी फेमस. आप यहीं से हो या कहीं और? शिमला से हो? हाँ, ठीक है. तो आप यहाँ पे आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है. ओके, सो उन्होंने कल रात भी हमारे लिए खाना वगैरह सब बनाए थे. बहुत शुक्रिया, अच्छे से खाए थे. ओके, तो ही इज द ओनर. हेलो भैया. हेलो, कैसे हो? ठीक है. कल रात आपने हमारा अच्छे से स्वागत किया है, बहुत शुक्रिया. यू रियली हेल्प अस यस्टरडे नाइट. Is the dining room. Okay. And inside also there is a hall. Okay. So आज ये रूम यहाँ पर. Okay. Dormitory. ये हाँ dormitory है ना? These are the people tourists. This can also be turned into a dormitory ना, टेबल को हटा के. कितने कैपेसिटी? इसमें है जी 15 लोगों. 15 लोगों का. हाँ जी. Very nice, yeah. It's recently opened, but you will really enjoy the stay over here. बहुत enjoy कर सकते हो आप यहाँ पे. ना इतना अच्छे से बना के रखा हुआ है. I really like the design. Design भी बहुत अच्छा है. हाँ जी. पहाड़ों में से चलते हैं. और यहाँ और टेंस कहाँ पे? अच्छा. एप्पल का पेड़ ना? जी. मैंने बाहर भी वहाँ भी देखा था. कब सीजन होगा? अक्टूबर. हाँ जी. ओके. अक्टूबर महीने में इसका सीजन होता है. ओके. तो कैसे बिकते हैं ये? किलो के हिसाब से बिकते हैं या किलो पीस के हिसाब से बिकते हैं? हम तो पेटियों के हिसाब से, बॉक्स के हिसाब से. कल रात भैया ने हमको स्वागत किया है और हमें यहाँ पे रेस्ट करने दिया है. बहुत बारिश गिरा है इसलिए हमने वीडियो नहीं बना पाया. अभी बना के दिखाता हूँ. For कितने लोग रेस्ट? 2 बंदे आराम से. 2 बंदे. 2 person can stay very comfortably. It's very warm inside and it's very good. ठीक also. बहुत अच्छे से बना के रखा हुआ है. और even the blankets, it's very warm. The pillows are very good. और इतने अच्छे से, there is no leakage, nothing. Very comfortable, very comfortable. तो आप इसका रेट कितना लेते हो? और उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट. ओके. Down here, just below the tent, they also used to do bonfire. Visitors or travelers can stay and also do bonfire. And these are the beautiful sweet tents. Wow, we really had a good stay over here. So these are the washroom. It's very clean, very hygienic. गीजर भी लगा. गीजर भी लगा हुआ है ना? Wow, it's very good, yeah. After bearing the seed, it takes 7 to 8 months to get ripe, and then they will sell in the market.
Himachal is very famous for apple. यहाँ भी लगा हुआ है. Okay. इतना सारा लगभग 1000 पेड़ होगा ना यहाँ पे. कितने जैसा है? ये है 100-200 का. 100-200 ही है, लेकिन और जगह में भी है आपका ना. और ओके. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. एंड ही हैव वो गेस्ट हाउस है ना, वो भी आपका. There is also one house where the travelers can stay. Whenever you are coming over here, please contact him and stay at his beautiful homestay and enjoy his delicious food also. I really had a good time over here at Chanshal Heights, and one night stay was really awesome. The food was also good. You will find only vegetarian, but it was really awesome. So please do contact them and stay over here. So that was all about this place. Thank you very much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye.